Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 3, circular and rotational motion. सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। तो आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से बहुत सी चीज़ें स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, जिसको हम लीनियर मोशन कहते हैं, इसी तरह से वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दायरे में मूव करती हैं, सर्कुलर मोशन बनाती हैं। मिसाल के तौर पर तमाम सैटेलाइट्स सर्कुलर मोशन बनाते हैं। ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है, ज़मीन सूर्य के गिर्द भी रोटेट करती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दायरे में रोटेट करती हैं। एक स्ट्रिंग के साथ आप छोटा सा पत्थर, छोटा सा स्टोन बांध के उसको इस तरह से रोटेट करते हैं, तो ये सर्कुलर मोशन है। तो आज हम इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन से मतलब कुछ चीज़ें स्टडी करेंगे। सर्कुलर मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम और इस किस्म की चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर मेजरमेंट, सर्कुलर मोशन को ही एंगुलर मोशन कहते हैं। तो एंगुलर मेजरमेंट, तो जिस तरह से लीनियर मोशन को आप मीटर में मेजर करते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को आप मीटर में मेजर करते हैं, इसी तरह से एंगुलर मेजरमेंट जो है वो रेडियन में की जाती है। तो गोया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वो रेडियन होता है। एक रेडियन क्या होता है ये देखिए, that a particle is moving in a circle. This is the radius. This is center of the circle और ये रेडियस। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो और इस तरफ इतना मूव कर जाए जितना इसका रेडियस है, तो यहाँ पे बनने वाले एंगल को हम एक रेडियन कहेंगे। ये जो कर्व्ड पाथ है इसे आर्क कहते हैं, इसे आर्क का नाम दिया जाता है। जब आर्क की लंबाई रेडियस के बराबर हो तो सेंटर पे बनने वाला एंगल एक रेडियन कहलाता है। एंगल सबटेंडेड by an arc whose length is equal to radius of the circle. ऐसी आर्क जिसकी लंबाई दायरे के रेडियस के बराबर हो, तो ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगी इसे हम एक रेडियन का नाम जो है वो देते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया जाता है। अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव करे इस कर्व पाथ में, तो ये तय करदा फासला ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बल्कि ये सेंटर पर जो एंगल बनाता है इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। We assume ये एक रॉड है, मैसलेस रॉड। मैसलेस रॉड इसलिए कहा गया है, वेरी लाइट रॉड, जिसके अपने मैस को हम नज़रअंदाज करेंगे। ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके गिर्द ये रोटेट करता है, ये यहाँ से इस तरह से
मूव करेगी, ये रॉड भी साथ ही इस तरह से स्वीप करेगी और पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा। लेट एट एन इंस्टेंट टी, ये एंगल थीटा है। आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ये इस पॉइंट पर पहुंच जाता है बी से सी पर। तो यहां T1 से T2 यानी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T, इतने टाइम में ये इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। लेट इट बी डेल्टा थीटा। तो ये डेल्टा थीटा जो है, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द कवर डिस्टेंस इज नॉट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। The angle delta theta made by a particle, या बॉडी कह लें, at the center is called angular displacement. सेंटर पे बनने वाले एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर स्मॉल एंगल इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा is a vector quantity. यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट तीन यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं जिसके लिए, डिग्री, रेडियन एंड रेवोल्यूशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए तीन यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम में ये रेडियन है। एसआई यूनिट रेडियन होगा। एसआई यूनिट दैट इज रेडियन। बाकी ये कन्वेंशनल यूनिट। तो ऐसे सिस्टम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन। तो मैंने आपको अभी बताया है कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर है तो फिर इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन कैसे मूव कर इसकी फाइंड करते हैं? डायरेक्शन फाइंड करते हैं जी राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल एक तो वेक्टर प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी राइट हैंड रूल से डिटरमिन करते हैं। तो डायरेक्शन इज फाउंड बाय राइट हैंड रूल। डायरेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल क्या है? ये राइट हैंड रूल क्या है? I write it simply RHR, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल ये है कि जिस तरफ को बॉडी घूम रहा है दाएं हाथ की उंगलियों को उसी तरफ घुमा देना है। ये इस तरह से रोटेट कर रहा है तो दाएं हाथ की उंगलियों को इस तरह से रोटेट करेंगे तो सीधा किया हुआ अंगूठा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता रहा है। तो जाहिर है मैं इसको अगर ऊपर से देखूं तो ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज
रोटेट कर रहा है ऊपर से देखने के लिए, ऊपर से देखते हुए, तो इस तरह से दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाऊंगा, तो इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। अगर ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, फिर मैं दाएं हाथ की उंगलियों को इस तरह से मूव करूंगा, लिहाजा इसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होगी। ग्रास्प, पकड़ना, मजबूती से पकड़ना। We grasp the axis of rotation. Such that our fingers curl, मुड़ती हैं, in the direction of rotation, in the direction of rotation. जिस तरफ बॉडी घूम रहा है उसी तरफ को आपने उंगलियों को मरोड़ना है। The thumb shows the direction of angular displacement. अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़ाहिर है ये बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो जिधर से हम इसको देख रहे हैं, अगर ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसको हम पॉजिटिव साइन असाइन करते हैं, और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये नेगेटिव साइन इसको हम असाइन करेंगे। कन्वेंशनली, रवायत के तौर पर, एंटी क्लॉकवाइज rotation is assigned positive. Is assigned positively. This means कि अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, और अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। सो दिस इज व्हाट अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी rate of change of angular displacement. So angular velocity is defined as rate of change of angular displacement. Rate of change of angular displacement. एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से इसको जाहिर करते हैं। If delta theta is the change in angular displacement
during time interval delta t. टाइम इंटरवल डेल्टा टी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, then angular velocity is rather average angular velocity delta theta over delta t. SI यूनिट ज़ाहिर है इसके रेडियन, इसके सेकंड, तो ये बनेंगे रेडियन पर सेकंड, इसके SI यूनिट बनेंगे। इस तरह से कन्वेंशनल यूनिट्स रेवोल्यूशंस पर मिनट भी क्या लेते हैं, होते हैं इसके, लेकिन SI सिस्टम में ये रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स होंगे। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, किसी खास लम्हे एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी instantaneous angular velocity. Limiting value of delta theta over delta t when delta t approaches to zero. बहुत ही थोड़े लम्हे के दौरान रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का नाम देंगे। Limiting value of delta theta over delta t when delta t approaches to zero, या rate of change of angular displacement during small time interval delta t such that delta t approaches to zero. Listen once again, rate of change of angular displacement during very small time interval delta t such that delta t approaches to zero. Instantaneous angular velocity limit delta t approaches to zero and delta theta over delta t. This is known as instantaneous angular velocity. Rate of change of angular displacement during very small time interval delta t, time interval इतना छोटा such that it approaches to zero. It is called instantaneous angular velocity. Now, angular acceleration. Angular acceleration. Angular acceleration. Angular acceleration is denoted by alpha, rate of change of angular velocity. Rate of change of angular velocity. If initial angular velocity is omega I, after time interval delta t
its final velocity. ओमेगा एफ। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी omega f minus omega I, and rate of change of velocity, that is alpha angular acceleration, that will be omega f minus omega I over delta t, or delta omega over delta t. This is the average angular acceleration. ऐसा यूनिट इसके क्या होंगे जी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसके एसआई यूनिट होंगे जी। और सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, साथ इसके लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। Instantaneous angular acceleration alpha instantaneous limit delta t approaches to zero delta omega over delta t, limiting value of delta omega over delta t such that delta t approaches to zero, or rate of change of angular velocity during very short time interval delta t such that delta t approaches to zero. Once again, rate of change of angular velocity during very short time interval delta t such that delta t approaches to zero is called instantaneous angular acceleration. Now, a relation between linear quantities and angular quantities. Some relations. S is equal to r theta. S is the linear displacement and theta is the angular displacement. Let a particle is moving in a circular path at a certain time, it is at this point E. अब जितना ये इसका रेडियस है, इतना अगर ये इस तरफ डिस्टेंस कवर करता है S is equal to R, तो इट इज 1 रेडियन। और इफ इट कवर्स 2 टाइम्स द रेडियस, रेडियस से 2 टाइम्स डिस्टेंस कवर करेगा तो दिस द एंगल विल बी 2 रेडियन। 3 टाइम्स द रेडियस डिस्टेंस कवर करेगा सर्कुलर पाथ में तो एंगल 3 रेडियन। इसका मतलब ये है कि इफ वी नो द आर्क लेंथ, यार की लंबाई हमारे पास हो और हम इसको आर के ऊपर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास रेडियन मिल जाएंगे। या यूं समझिए कि अगर हमारे पास आर्क की लेंथ है तो हम ये देखना चाहें कि ये कितने रेडियन बनाता है तो हम क्या करेंगे, इसे रेडियस के ऊपर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वी नो कि जब ये 1 आर के बराबर है तो 1 रेडियन, 2 आर के बराबर है तो 2 रेडियन, 3 आर के बराबर है तो 3 रेडियन। इसे आर्क लेंथ कहते हैं, इसे आर्क लेंथ कहते हैं। सो देयरफॉर जो थीटा हमारे पास रेडियन में आएगा वो कैसे होगा, आर्क लेंथ
divided by radius. Theta is equal to S over R. Therefore, S is equal to R theta. This is the linear quantity and this is the angular quantity. अब आप देखें कि अगर कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट होता है, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर और यहाँ से ये पूरा सर्कल मुकम्मल कर लेता है तो ये कितने रेडियन एंगल बनाएगा? तो आप लोग जानते हैं कि ये इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr के बराबर होता है. रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन के दरमियान रिलेशन. तो दायरे का सर्कमफ्रेंस दैट इज इक्वल टू 2πr. This means during complete revolution, जब ये एक चक्कर पूरा मुकम्मल कर ले, S इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 2πr की लंबाई कितनी होगी और थीटा कितना होगा? S over R, that is 2πr over R. R के साथ कैंसिल कर देंगे तो दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2π रेडियन. Theta is equal to 2π radian. This means when the body completes a full circle, जहाँ से स्टार्ट होके it completes full revolution, it covers 2π radian. और डिग्री में आप लोग जानते हैं थीटा इज इक्वल टू 360 degree. This means 2π radian is equal to 360 degrees. So 2π radian is equal to 360 degree and 1 radian 360 divided by 2π 50. 1 degree is equal to 360 by 2π. 1 degree is equal to 360 by 2π, 57.3 degree. This is the relation between radian and degree. Now the relation between linear quantities and angular quantities. A relation between linear and angular quantities. V is equal to R omega. पहला रिलेशन है V is equal to R omega. कैसे करते हैं जी? We know that S is equal to R theta. So delta S R delta theta.
डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, दोनों तरफ टी के ऊपर डिवाइड कर देंगे। डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, दोनों तरफ लिमिट लगा दें, इंस्टेंटेनियस बना दें। डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एस over delta t is equal to limit delta t approaches to 0 or delta theta over delta t. This is instantaneous velocity v is equal to r को इधर लिख लें, धन ये ऐसे बन जाएगा लिमिट डेल्टा थीटा ओवर delta t, whereas delta t approaches to 0 and it will be r omega. जिस तरह से s is equal to r theta, similarly v is equal to r omega. Similarly, a is equal to r alpha. A is equal to r alpha. ये यहां से हम प्रूफ कर लेंगे। We know that, बस यहां से स्टार्ट कर दें। V is equal to r omega delta v r delta omega delta v by delta t r delta omega over delta t limit delta t approaches to 0 delta v over delta t r limit delta t approaches to 0. This is very simple, इसलिए मैं इसे रैपिडली कर रहा हूँ। तो v over t you know alpha, sorry v over t a, v over t you know a is equal to r delta omega over delta t alpha. So a is equal to r alpha. So relation between linear quantity and angular quantity. When the angular quantity is multiplied by radius, it becomes linear quantity. Angular velocity is multiplied by the radius, it becomes linear velocity. And angular displacement s is equal to r theta. Angular displacement is multiplied by radius, it becomes linear displacement. Equations of angular motion. एंगुलर मोशन की इक्वेशन, जिस तरह से लीनियर मोशन की इक्वेशन हमने पढ़ी हैं, इसी तरह से एंगुलर मोशन की इक्वेशंस हमने लीनियर क्वांटिटीज को एंगुलर क्वांटिटी से रिप्लेस कर देना है जी। चलें जी, इधर हम लीनियर मोशन की इक्वेशन लिख लेते हैं जी, और इस तरफ हम एंगुलर मोशन की। You know S is equal to VT, और इसके एनालोगस, इसकी मुतशाबहत में जो एंगुलर मोशन की इक्वेशन बनेगी, ये थीटा हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, ये टी ही रह जाएगा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। वी एवरेज वी आई प्लस वी एफ ओवर टू ओमेगा एवरेज ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ ओवर टू वी एफ वी आई
प्लस AT ओमेगा F ओमेगा I plus alpha t. V replaced by omega, V replaced by omega, A by alpha and T by T. S VIT plus half AT square. S is replaced by theta is equal to omega IT plus half alpha T square. This is the equation of angular motion. Similarly, third equation you know, VF square minus VI square is equal to 2AS. So this will be changed to omega F square minus omega I square is equal to 2 अल्फा थीटा। जिस तरह से किसी भी लीनियर मोशन की इक्वेशन को हम एंगुलर मोशन की इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। ये चंद एक बेसिक चीज़ें जो चैप्टर के शुरू में दी गई हैं, आइंदा चैप्टर के अंदर ये इस्तेमाल होंगी, ये हमने स्टडी कर ली हैं। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।